and then we drew the position circle. So this is what we did yesterday. So अब हम आगे चल रहे हैं बेटा, the next method which is horizontal angle. So let's go. Position circle by horizontal angles. Horizontal angle is the smaller angle, not the reflex angle, please remember, subtended by two conspicuous objects as the observer. This means horizontal angle to us, its value cannot be more than 180 in any case. Horizontal angle subtended by a pair of objects at the observer depends on two things. One, the distance between the objects, and two, it depends on the distance or the range of the observer from the baseline, which is the segment joining the two objects. The horizontal angle on the ship is obtained by either sextant, in that case we refer to that as horizontal sextant angle, or it can also be obtained by difference between the bearings of the two objects. Okay, so beta, just go through these points comfortably one by one. Let me know any doubts coming at any of the points. All clear beta? बेटा ये टॉपिक दोबारा रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा बाद में? Everybody is there? Yes sir, clear है sir. Yes sir, clear. Yes, sir. Okay. Clear है हो ना बेटा? कहीं 8 बजे अभी बिस्तर में तो नहीं हो? नहीं सर, वो पढ़ रहे थे सर, रीड कर रहे थे सर. ओके ओके ओके, फिर ठीक है बेटा, फिर ठीक है. So let's go. Okay, so just read it and let me know. We will proceed ahead. सर ये लास्ट वाला पॉइंट समझ लिया है. ओके बेटा, इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा? सर इससे बेरिंग से हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे निकल जाएगा डिफरेंस से? ओके बेटा, ओके. लेट अस से आपका शिप एंकर पे है और आपको 2 लाइट हाउस दिखाई दे रहे हैं. एक लाइट हाउस राइट अहेड है शिप के, वट एवर हेडिंग ऑफ द शिप इज, ए लाइट हाउस इज राइट अहेड. और दूसरा लाइट हाउस जो है वो आपके अबीम है, एग्जैक्टली अबीम, राइट. तो आप अगर उनकी बियरिंग लेते हो तो उनकी बियरिंग का जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव यू द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स. सो इस केस में आप बता सकते हो हॉरिजॉन्टल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री सर. वेरी गुड. सो दिस इज व्हाट दे मीन कि आप 2 ऑब्जेक्ट की बियरिंग ले सकते हो और उन बियरिंग का जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव यू द हॉरिजॉन्टल एंगल. क्लियर बेटा? यस सर. ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड. Bearings of the two objects. If horizontal sextant angle is available, बेटा, is the sound coming okay? यस सर. यस सर. Okay बेटा, okay. it must be corrected for index error to convert to horizontal angle. Horizontal angle will be equal to horizontal sextant angle plus minus index error of the arc
index error would be plus, and on the arc, index error would be minus. Horizontal angle by bearings is obtained by taking the difference between the bearings of the two objects. Both bearings need to be necessarily of the same type, so please be careful. That is, both may be gyro bearings, or both may be compass bearings, or both may be even relative bearings taken with respect to ship's head, or both may be two bearings. However, if both happen to be two bearings, then we can use them as PL, and there will be no need to deploy this concept of position circle. The difference in the bearings is greater than 180 degrees. Horizontal angle will be 360 minus difference. That means our horizontal angle in no case can be more than 180 degrees. So beta, just go through these points one by one. Let me know if doubts coming anywhere. Clear. Clear, sir. Okay, beta, let's go. The biggest advantage of this method is that this can be deployed when we have the bearings by gyro, compass, or ship's head, and we do not know the gyro or the compass error. Now we run through the procedure to draw the position circle by horizontal angles. First thing would be to obtain the horizontal angle for the pair of objects. Two would be to get the complement of the horizontal angle, that is 90 minus horizontal angle. Next would be to draw the baseline on the chart, that is the segment joining the two objects whose horizontal angle is in question. Establish to which side of the baseline does the ship's position exist. Now it's very, very important for this method that once you draw the baseline, you take a pause, decide which side of the baseline does the ship exist. Now, in some cases, it may be quite straight and simple that on one, if you have landmass or non-navigable waters on one side, then that side can be ruled out. However, there can be situations in which you may have navigable water on both sides of the baseline. The gyro or the compass bearings of the objects can then be used to figure out which side of the baseline does the ship lie. Again, to reiterate that it's one of the most important parts of this process to establish which side of the baseline does the vessel exist. Draw the angle of 90 minus horizontal angle at both ends of the baseline. Now, which side of the baseline it has to be drawn? We'll see that because you can draw these on either side of the baseline. If the horizontal angle is less than 90 degrees, then this angle of 90 minus horizontal angle is to be drawn on the side of the baseline to which the ship's position exists. That means towards the position of the vessel. If horizontal angle is greater than 90 degrees, then this 90 minus horizontal angle value is to be drawn on the side of the baseline that is opposite to which the ship's position exists. So this particular method has these few important things which you'll have to keep in mind. The
Point where the arms of these angles intersect is the center of the position circle. From the center of the position circle so obtained, the end of the baseline, either end of the baseline shall form the radius of the position circle. Just go through these points beta one by one. Let me know your doubts. Beta, your voice is very, very low. Can you repeat? Okay, I will show you actually this procedure on the chart. So maybe once you see, what is the doubt, beta? Beta, you can type it out in the chat box. तुम्हारी आवाज broken आ रही है. Anybody able to get what he is asking, beta? He is asking baseline, sir. Okay, what is baseline? ये देखो बेटा, baseline on the chart is the segment joining the two objects. जो हमने horizontal angle निकाला है दो objects के बीच में, अगर उन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो उस लाइन को हम लोग baseline बोलते हैं. Clear? Okay, let's see it on the chart. Whatever doubts you have will get sorted out. Let's see. In fact, this particular slide has the entire stepwise process what we follow to draw the position circle. So you can take a screenshot of this particular slide and save on your device. हम लोग अभी एक क्वेश्चन देखेंगे चार्ट पे एंड इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. So you can take a screenshot and save it on your device as HSA, horizontal sextant angle. डन बेटा, चलें आगे. Yes, sir. Okay. We shall see how to implement this procedure through a simple example. Following bearings were observed from a vessel at anchor. Old head of Kinsale 242 degrees gyro, Roche's Point 290 degrees gyro, Bellycotton Island 037 degrees gyro. Find the anchor position and the error of the gyro. So beta, pick up your calculators. Let me know what is the horizontal angle between Kinsale and Roche's Point. So 048. Very good, beta. Very good. So this is the horizontal angle between old head of Kinsale and Roche's Point. Now also tell me what is the horizontal angle between Roche's Point and Bellycotton. 253. How much, beta?
So 253. Everybody agree? 107. sir. Very good. So, 90. beta, you remember it cannot be greater than 180. So if you get a horizontal angle more than 180, you subtract it from 360, right? Yes, sir. Very good. So let's proceed ahead. सर हमने किन्सेल और बेली कॉटन को क्यों नहीं किया सर? ओके, अभी बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ. Obviously, in this case, since the gyro error is not given to us, we cannot use the concept of cross bearings. So we could probably look at deploying the process of position circle by horizontal angles. Let's first identify these landmarks. Now, this is Old Head of Kinsale, this is Roche's Point, and this is Ballycotton Island. Then we make pairs. Now, if you have three objects, you can make three pairs, one pair between these two objects, another pair between these two objects, and the third pair between these two objects. However, to keep the plotting simple and avoid crisscrossing of the plot, it is advised that you pair the middle object with each of the other two objects. What we mean is, in this case, Roche's Point is the middle object you can see on the chart lying between the two. So we can form two pairs, one between Old Head of Kinsale and Roche's Point, and another between Roche's Point and Ballycotton Island. क्या क्लियर हुआ? No sir. ओके, लिसन वंस अगेन बेटा. ये देखो, हमारे पास ये तीनों ऑब्जेक्ट चार्ट में आ गए, राइट? अप टू हियर ओके? Yes sir. ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा. Old Head of Kinsale, this is Roche's Point, and this is Ballycotton Island. Then we make pairs. Now, if you have three objects, you can make three pairs, one pair between these two objects, another pair between these two objects, and the third pair between these two objects. However, to keep the plotting simple and avoid crisscrossing of the plot, it is advised that you pair the middle object with each of the other two objects. What we mean is, in this case, Roche's Point is the middle object you can see on the chart lying between the two. So we can form two pairs, one between Old Head of Kinsale and Roche's Point, and another between Roche's Point and Ballycotton Island. So बेटा अब क्लियर हुआ? Yes sir. हमें जो भी बॉडी होगी सेंटर से उससे दोनों एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. Right. So when you see the three objects on the chart, you will be able to identify कि middle object कौन सा है. हमें middle object के साथ ही HSA के ग्रुप बनाने हैं. Right बेटा? Yes sir. Understood sir. Very good. अगर चार पोजीशन होती तो फिर किसको लेते मिडल? Ask again बेटा. सर अगर तीन की जगह चार लैंडमार्क होते हैं तो फिर किसको लेते मिडल? Okay. चार लैंडमार्क आएंगे नहीं बेटा. There will always be three. Either two or three. अगर दो लैंडमार्क होंगे तो सिर्फ एक पोजीशन सर्कल आएगा, और अगर तीन लैंडमार्क होंगे तो फिक्स आ जाएगी. चौथा लैंडमार्क कभी क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही नहीं. ओके सर. Okay. Let's proceed ahead now. Now, for the first pair between Old Head of Kinsale and Roche's Point, the horizontal angle is 48 degrees because the difference between their bearings is 48 degrees. 90 minus 48 gives you 42 degrees. The second pair, that is between Roche's and Ballycotton Island, the horizontal angle is 107 degrees, more than 90 degrees. And 90 minus horizontal angle gives us minus 17 degrees. Now we deploy the process that we have learned to draw the position circles. So first, for Roche's Point and Old Head of Kinsale, we draw the baseline. Now then we establish on which side of the baseline does the vessel lie. In this case, this side is landmass. Obviously, the ship would be on the sea side, so the vessel lies on this side of the baseline. Now,
With respect to baseline, both at old head of Kinsale and at Roche's point, we have to draw this 90 minus horizontal angle, that is 42 degrees. So we will draw these angles at both ends of the segment or the baseline. Where these two intersect at C1, this forms the center of the position circle. ओके सो बेटा अब तक जो प्रोसीजर हमने किया है चार्ट पे, इसमें जो भी डाउट्स हैं आस्क मी, हैव अ लुक एंड लेट मी नो योर डाउट्स। सर इसमें जैसे इसने हमें बताया था कि हमें मतलब ये ध्यान रखना है कि कौन सी साइड पे हम ड्रॉ करेंगे, हमारी बेस लाइन के कौन सी साइड पे ये एंगल्स ड्रॉ होंगे। इस केस में तो हमारे पास लैंड है पीछे, हमें क्लियर है। अगर मान लो दोनों साइड से नेविगेबल डेप्थ होती तो मैं कहाँ जाता सर, कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? ओके बेटा ओके, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये बेस वाला एक प्लॉट कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर दोनों साइड में नेविगेबल वाटर आ जाए तो हमें कैसे पता करना है कि हमारा शिप किस साइड में होगा। आई विल टेल यू। ओके सर। Sir, what is the reason subtracting the horizontal angle from 90? व्हाट इज द रीजन बेटा? Yes, sir. Why are we subtracting it from 90 degrees? ओके बेटा, इसका रीज़न ये है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द मेथड। और ये पार्ट ऑफ द मेथड क्यों है? अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाओगे तो ये ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है। ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि कोई भी कॉर्ड जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल जनरेट करेगी, ओके, दैट वुड बी डबल द एंगल जनरेटेड एट द सेंटर। ये बहुत हैवी हो जाएगा अगर मैं इसकी डिटेल में चला जाऊं। ये 10th क्लास की ज्योमेट्री में आता है बेटा। सो हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी के बेसिस पे ये मेथड बनाया गया है। सो हमें तो बस इस मेथड को फॉलो करना है। Okay. ओके बेटा? Yes, sir. ओके, और बताओ बेटा, और डाउट? ओके सर जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि इसमें या तो हमें 2 बेयरिंग्स दी होंगी या 3 बेयरिंग्स दी होंगी। राइट। यस सर। तो अगर मेरे को 2 बेयरिंग्स दे रखी होंगी तो चलो 3 हम्म, बेयरिंग में तो मैं क्लियर समझ सकता हूँ कि ये एचएसए का क्वेश्चन है। अगर 2 बेयरिंग दे रखी हैं तो उसमें मैं 2 पॉइंट बेयरिंग नहीं लगाऊंगा सर। बेटा 2 पॉइंट बियरिंग क्या होता है? सर अगर मेरे को दो लाइट हाउस की बेयरिंग दे रखी है, मैं बेयरिंग ड्रॉ करूंगा, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरी पोजीशन आ जाएगी सर। राइट, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही, आप ऐसे ही करोगे। तो आप कह रहे हो जैसे इस क्वेश्चन में मेरे को अगर किनसे और रोशस पॉइंट की अगर बेयरिंग दे रखी होती तो मैं दोनों ड्रॉ करके और इंटरसेक्शन से अपनी पोजीशन ही निकाल सकता सर। बिल्कुल सही बेटा। तो आप ये कहना चाहते हो कि अगर हम ये 242 और 290 की बेयरिंग ड्रॉ करें तो हमारी पोजीशन आ जानी चाहिए सीधा, इजंट इट? यस सर। अब बेटा ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, ये है बेटा क्वेश्चन। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि ये बियरिंग कौन सी बियरिंग है? अगर मान जायरो लो सर बियरिंग ट्रू ट्रू और ट्रू बेयरिंग दी होती। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि जायरो बियरिंग कैन बी प्लॉटेड ऑन द चार्ट डायरेक्टली? नो सर। नो। एरर ऑफ द जायरो हमें पता है? नो सर। इन दिस वो केस वी नहीं कैन नॉट। पता है। लेट्स से द क्वेश्चन गिव्स मी ट्रू बेयरिंग और द जायरो एरर इटसेल्फ, तो मैं यूज कर सकता हूं ना सर? वेरी गुड बेटा। अब लेट्स गो लिटिल बिट मोर बैक। अब हम यहाँ मेथड पे आ जाते हैं, ये जो हमने पहले डिस्कस किया था। सो यहाँ पे बेटा आप ये चीज़ को रीड करो, बोथ बियरिंग्स नीड टू बी ऑफ द सेम टाइप। ये ट्रू के आगे देखो क्या लिखा है। यस सर, क्लियर है ओके, सर। सो अगर हमें यस ट्रू बियरिंग मिल जाए, चाहे वो डायरेक्टली दी गई हो या हमें कंपस बियरिंग और कंपस एरर दी गई हो, तो हम तो सीधा उनको प्लॉट करके अपनी पोजीशन निकाल लेंगे, फिर हम ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे। ओके ओके सर, बेटा, अंडरस्टूड। ओके, वेरी गुड। और बताओ बेटा, और कोई डाउट्स आ रहे हैं? अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं अभी। No, sir.
Very good. So everybody will be able to plot this center C1. सर Yes, जो sir. 42 डिग्री की सर जो लाइन मारी है वो दोनों वो बेस लाइन है जो दोनों आइलैंड सॉरी जो दोनों बेरिंग पॉइंट्स को जो मीट कर रही है। ये है बेटा बेस लाइन जो दोनों लाइट हाउस को ज्वाइन कर रही है। यहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, दिस इज द बेस लाइन। तो ये अपन ने हमने सर 42 डिग्री की मार दी इस पे। हमने इस बेस लाइन पे 42 डिग्री का एंगल बनाया है। ये 42 डिग्री का एंगल है बेटा। ओके सर, ओके सर। ओके, और ये वहां हमने से दोनों से 42 मार दिया। यस बेटा, हमने 42 डिग्री का एंगल बनाया है। और किस तरफ बनाया है? हमने इसे शिप की तरफ बनाया है। शिप भी सी में होगी, हमने इस एंगल को भी शिप की तरफ ही बनाया है। शिप की तरफ क्यों बनाया है? हम तो दूसरी तरफ भी बना सकते थे, हमने शिप की तरफ क्यों बनाया है इसे? सर बेरिंग तो हम शिप की ले रहे हैं ना। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। किसी केस में हमें इसे शिप के ऑपोजिट साइड में भी बनाना पड़ सकता है। ये देखो बेटा, ये हम आ गए मेथड पे। ये देखो बेटा क्या लिखा है जहां मेरा कर्सर है, हॉरिजॉन्टल एंगल लेस देन 90। तो आगे क्या लिखा है पढ़ो। Is drawn on the chart that side of baseline of which ship position exists. राइट। और अगर हॉरिजॉन्टल एंगल 90 से बड़ा हो जाए, हॉरिजॉन्टल एंगल ग्रेटर देन 90, तब कहां ड्रॉ करना है? That is opposite side. वेरी गुड, इसे याद रखना है बेटा। Okay सर। ओके, लेट्स गो बैक टू द प्लॉट। सो और डाउट बताओ बेटा मुझे, और कोई डाउट आ रहा है? No sir, thank you. Very good. Let's proceed ahead now. So with this C1 as the center and C1 to old head of Kinsale or C1 to Roche's point, either one of them, they'll be same as radius. We draw the position circle and we draw it only on the side of the segment or the baseline on which the ship lies. This is how we draw it only on this side, and we don't have to draw this full circle because the vessel cannot be on this arc in any case. So बेटा बन गया पोजीशन सर्कल, एनी डाउट? सर ये सेंटर C1 को लिया इधर। इसका सेंटर C1 पर है बेटा। रेडियस क्या लिया सर इसका? बेटा C1 से लेके कोई भी लाइट हाउस, ओके, दोनों में से कोई भी लाइट हाउस जिनके बीच में हमने एंगल बनाया है, दैट इज द रेडियस। Okay, so we have one position circle. Let's proceed ahead now. Now let's draw the position circle between Roche's and Ballycotton pair. So we draw the baseline for Roche's and Ballycotton Island. Now please see, in this case also the ship is on the sea side. It cannot be on the land side. But here the horizontal angle is more than 90 degrees. In the previous case, horizontal angle was less than 90. So these complement angles were drawn on the side on which the ship lies. In this case, the horizontal angle is 107, or the 90 minus horizontal angle came minus 17. So this 17 degrees will be drawn on the side opposite to which the ship exists. In this case, the ship exists on this side of the red baseline, so 17 degrees would be drawn on the opposite side, like this. We get C2 as the center of the position circle. With C2 as the center and its distance either to Roche's Point or Ballycotton Island acting as radius, we draw the position circle only on the side on which the ship exists. The ship lies on this side of the baseline, so the position circle is drawn only on this side, that is the sea side. So the blue is one position circle, the red one is the second position circle,
Both are of simultaneous observations. Wherever they intersect, obviously that is the anchor position of the vessel. Okay, beta. Now have a good look at the diagram, at the plot. Let me know your doubts. Sir, can you please explain this C2 once again, sir? ओके बेटा, C2 में बेटा कहाँ पे डाउट आ रहा है, एग्जैक्टली किस पॉइंट पे आ रहा है? So like when we are joining this C2 line from this Roche point and this belly cotton, so if we can mark it on the land as well on the chart, there is no problem. आप बेसलाइन की बात कर रहे हो बेटा? No sir, the lines which we are making, this angle, the 17-degree angle which we are making and making the point C2. Right. This we are making on the land, na sir? Yes, that's right beta. It can go on land beta, there is no problem. It can go on land also. This is the center of our position circle. The ship will not be here. Okay sir. Okay sir, thank you. Okay. सर हाँ बोलो बेटा. ये माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? -17 से क्या पता लग रहा है हमें? ओके बेटा, जब भी कभी ये एंगल माइनस में आएगा ना, 90 माइनस एच ए की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो इसका मतलब है कि जिधर भी शिप है उसके ऑपोजिट साइड में उसे बनाना है. देखो हमने बेस लाइन पे जब ये 17 डिग्री का एंगल बनाया तो हम शिप के ऑपोजिट चले गए. ऑपोजिट क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ पे माइनस था. ओके, यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा था, 107 था. पहले वाले केस में देखो माइनस नहीं था, पहले वाले केस में +42 था. तो हमने 42 को उस डायरेक्शन में बनाया जिस डायरेक्शन में हमारा शिप है. क्लियर हुआ बेटा? ओके सर. यस सर. यस सर. ओके, और बताओ बेटा, और डाउट्स? सर अपोजिट में बनाएंगे तो हमेशा मतलब माइनस में नहीं आएगा उस केस में, तो क्योंकि हमेशा 90 से बड़ा होने वाला है. फिर से पूछो बेटा, यू गॉट ब्रोकन. सर जो अपोजिट वाला केस है तो उसमें तो हमेशा मतलब माइनस में ही आएगा, तभी अपोजिट बनेगा. पॉजिटिव आएगा तो मतलब एक उसी डायरेक्शन में बनेगा, अपोजिट नहीं बनेगा. बिल्कुल सही है बेटा. अगर 90 माइनस एच ए पॉजिटिव आएगा तो जहाँ पे शिप है हम उधर ही एंगल बनाएंगे. अगर 90 माइनस एच ए नेगेटिव में आएगा तो हम शिप के ऑपोजिट साइड में एंगल बनाएंगे. ओके सर. ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड. हमारे पास पोजीशन आ गई है, अब हमें जायरो एरर भी ढूंढनी है. Now to get the gyro error, we read off the true bearing of any one of these objects or points from the chart. It is advised that we read off the bearing of the farthest object so that the error does not get amplified. So in this case, please read off the true bearing of old head of Kinsale from the anchor position. And you can do it on the chart by putting your parallel ruler, transferring it to compass rose, and reading of the true bearing of the old head of Kinsale. Now comparing the true bearing of the old head of Kinsale read off from the chart with old head of Kinsale bearing of 242 degrees gyro provided in the question, that can give us the gyro error as required by the question. So in this case, we have dealt with two situations. One in which the horizontal angle was less than 90 degrees, that is the blue position circle, and the other was where the horizontal angle was more than 90 degrees, the red position circle. Okay, so beta, anything which is in doubt?
नो सर। सर मेरा नेट स्टक हो गया था सर, वो ना बाद में वो दोनों वो सर क्या बोलते सर्कल जहाँ पे मीट कर रहा है वो एंकर पोजीशन होगी, उसके बाद से समझ में नहीं आया सर बात, आपने कुछ और बोला क्या? ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, अभी बता देते हैं बेटा। ये लो एंकर पोजीशन आ गई हमारी, अब सुनो आगे। ruler, transferring it to compass rose and reading of the is the anchor position of the vessel. Now to get the gyro error, we read off the true bearing of any one of these objects or points from the chart. It is advised that we read off the bearing of the farthest object so that the error does not get amplified. So in this case, please read off the true bearing of old head of Kinsale from the anchor position, and you can do it on the chart by putting your parallel ruler, transferring it to compass rose and reading of the true bearing of the old head of Kinsale. Now comparing the true bearing of the old head of Kinsale read off from the chart with old head of Kinsale bearing of 242 degrees gyro provided in the question, that can give us the gyro error as required by the question. समझ में आ गया बेटा? ओके सर, अपने को सर जो एंकर पोजीशन जो आई है उससे जो भी लाइट हाउस की बेयरिंग ली थी उससे बेयरिंग सॉरी उसकी उसे देखना है सर अपना क्या बेयरिंग बन रही है और उसको कंपेयर करना है जायरो, उसकी जो पहले गिवन जो वो थी हेडिंग उससे। वेरी गुड बेटा, राइट। ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू। ओके, और बेटा एग्जैक्टली फॉर दिस पर्पस डाउट है। हाँ बोलो जी, बोलो डाउट। सर आप इसमें आप वो पोजीशन से लेके और जो ये 42 लिखा हुआ है नीचे दूर वाला, ये जो लाइन है इसको पहले रूलर से हम कंपास पे मेजर करेंगे। हाँ बेटा, ये बोलना चाह रहे हैं ना यहाँ सर? से लेके यहाँ तक बेटा, इसको तो सर कंपास रोज में दोनों तरफ डायरेक्शन दी है, कौन सी वाले लेंगे हम लोग? अब बेटा आप मुझे बताओ, अगर शिप आपका यहाँ पे है तो लाइट हाउस किधर दिखेगा? इस तरफ दिखेगा या नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा? नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा या साउथ वेस्ट में दिखेगा बताओ? नॉर्थ वेस्ट में। बेटा अगर एंकर पोजीशन यहाँ है तो लाइट हाउस तो इधर है ना? लाइट हाउस कौन सी डायरेक्शन में दिखाई देगा? नहीं सर, समझा नहीं मैं। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, फिर से समझो बेटा, आप इस जगह पे हो, आपका शिप यहाँ पे है, ठीक है, आप ब्रिज में खड़े हो और आप ये लाइट हाउस को देख रहे हो। यहाँ पे एक सुंदर लड़की हाथ हिला रही है आपको, वो आपको किस डायरेक्शन में दिखाई देगी? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, कहाँ दिखाई देगी बेटा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में ना? देखा, आप समझ में आ गया। तो बेटा जब आप कंपास रोज पे दो डायरेक्शंस को देखोगे तो कौन सी वाली पिक करनी है? लो बेटा, नेट उड़ गया तुम्हारा। साउथ वेस्ट यूज करेंगे ना? हाँ एग्जैक्टली, जिसका तो डाउट साउथ था वेस्ट वो वाली है। हाँ बेटा, हाँ समझ में आया बेटा। बियरिंग का मतलब आसान भाषा में समझो कि कौन सी डायरेक्शन में लाइट हाउस है, ये मतलब होता है बियरिंग का। ओके सर। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज आपने समझ लिया है, हॉरिजॉन्टल सेक्सटेंट एंगल का कॉन्सेप्ट। So in this case, we have dealt with two situations. One in which the horizontal angle was less than 90 degrees, that is the blue position circle, and the other was where the horizontal angle was more than 90 degrees, the red position circle. सो हाँ, और कोई डाउट था बेटा? बोलो। यस सर।
सर आप ये बता रहे थे कि मतलब अगर दोनों साइड पे नेविगेबल डेप्थ होगी तो मैं किधर पे ड्रॉ करूंगा ये दोनों ये मैं एंगल? बताऊंगा बेटा, अभी इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। अभी के लिए ओके आप इतना माइंड में क्लियर रखो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर दोनों साइड में नेविगेबल वाटर हो तो किस डायरेक्शन में शिप होगा, कैसे पता ओके लगाएं। ओके, वेरी गुड बेटा। सो हमने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर अप किया है, और कहते हैं सुबह सुबह का जो कॉन्सेप्ट किया हो वो कभी भूलता नहीं है। ओके, सो ब्यूटीफुल सनराइज इज हैपनिंग, धूप आनी शुरू हो गई है। सो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्सटेंट एंगल जो है ये कवर अप हो गया है। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसी पे आगे और देखेंगे। अभी हमने हॉरिजॉन्टल सेक्सटेंट एंगल में ही 2-3 कॉन्सेप्ट और कवर करने हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर व्हेन आई मीट विद यू वी विल कवर अप दोज कॉन्सेप्ट्स। एंड ऑलरेडी 8:58 बेटा, क्लास नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम हो गया है, 9 o'clock इज योर नेक्स्ट क्लास। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, हाय सर। बाय बाय। हाय सर।